Assalamualaikum, grade 7. Faiza Nadeem is standing here and she is going to teach you English. Alright? But before we start our lesson, let me ask a question from you. How are you? I hope you all are hale and hearty. I hope you all are safe and sound. I hope you all are enjoying your life. But among all this hustle and bustle of life, keep this in your mind that your academics should be your first priority. आपकी पढ़ाई आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए और ऑनलाइन गेम्स उसके बाद सारी. ठीक है? तो चलो, without further ado, let's start today's lesson. Yes, my dear grade 7. What is the board telling you? The board is telling you that you have to take your Oxford Progressive Reader out and immediately open page number 228. This unit 1, is called as elephants. And today the comprehension that we are going to do specifically is रिवेंज. रिवेंज जो है ये एक कंप्लीट स्टोरी है और इस स्टोरी में से आपके ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव रीडर वालों ने एक एक्सर्प्ट निकाला है. राइट? ये एक्सर्प्ट बताता है कि किस तरह उस स्पेसिफिक हाथी ने अपना बदला लिया. बट बिफोर वी स्टार्ट आवर लेक्चर, राइट, बिफोर वी स्टार्ट द डिस्क्रिप्शन, लेट्स सी व्हाट द मीनिंग्स आर. इस स्पेसिफिक टॉपिक में, इस स्पेसिफिक कॉम्प्रिहेंशन में कुछ बर्मीज वर्ड यूज हुए हैं. ठीक है? क्योंकि आपको पता है एलिफेंट्स आर मोस्टली फाउंड इन बर्मा और बर्मा के जो एलिफेंट्स है वो वहाँ पर उनकी एज एन इंडस्ट्री यूज होते हैं. वो क्या करते हैं कि जो वुडन लॉग्स वो कट करते हैं और उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. These elephants are used in those situations. ठीक है? These elephants are used as an assistant or an aid in collecting the logs up, piling them up, और अगर कोई log कहीं stuck हो जाए तो उसको निकालने के लिए. इसके अलावा transporting के लिए भी ये elephants can carry heavy weights and thus these are used for assistance. ठीक है? पहले बर्मीज वर्ड और उनकी मीनिंग पढ़ लेते हैं और उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा स्टोरी ब्रीफ कर दूंगी. तो सबसे पहले वर्ड जो है वो है टाई, अ हाउस बिल्ट ऑन टॉल पोल्स और स्टिल्ट्स. ठीक है? वहां पर जो उनका कैंप था जहां पे ये लोग सारे एलिफेंट्स को लेके काम कर रहे थे लॉगिंग का और उसकी ट्रांसपोर्टेशन का, their houses were actually called as ties and they were built on tall poles and stilts. उसके बाद सीनूक. सीनूक कौन होता है? सीनूक होता है एज साइलेंट है. ठीक है? बर्मीज ओवरसियर अंडर मैकेज कमांड. मैके वहां पर ब्रिटिश सुपरवाइजर था और जितने लोग उसके अंदर काम करते थे उन सारों को सीनूक कहा जाता था. ठीक है? ओसी, और जिसका प्लूरल है ओसीज, वो होते हैं एलिफेंट्स के हैंडलर्स और राइडर्स. ठाकिन, ठाकिन एक टर्म है आउट ऑफ रिस्पेक्ट जो यूज की जाती है एक आदमी को एड्रेस करने के लिए. तो जो मके था, कमांडर मके, ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज ठकीन बाय ऑल द ओसीज. ठीक है? जो भी वहाँ एलिफेंट हैंडलर्स थे, जो भी वहाँ उनके वर्कर्स थे, जो वहाँ एलिफेंट्स को असिस्ट करते थे, गाइड करते थे, they take care of those elements, they were all called as Usis and they all called Mackay as Tekken. And cheroot. Cheroot is a kind of a cigar which has come from a Burmese word shruto, which means a roll of tobacco. So roll of tobacco obviously is a cigar. These were the vocabulary and their meanings as far as Burmese words were concerned. Let's move back to the comprehension revenge. Revenge क्या होता है? Revenge word से आपको क्या समझ आता है? Revenge word से आपको समझ आता है बदला लेना.
right? So this comprehension is all about the revenge of an elephant from Takeen और मिखे. हुआ यूं कि ठकीन जो था वो एक बहुत ही जालिम और क्रूल किस्म का लीडर था. उसने क्या किया, उसने एक स्पेसिफिक एलिफेंट जो था उसके ओनर को इतना सख्त काम दिया कि वो उस काम के अंडर किसी एक्सीडेंट में डाई हो गया. He died in an accident while doing that work. तो अब क्या हुआ, जैसे ही वो आदमी मरा, आपको पता है कि elephants are very, 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 very attached to their rulers. They are very much attached to the people whom they have been assigned to, who take care of them. ठीक है, तो सारे जो वहाँ पर ओसीज थे वो अपने एलिफेंट्स को लेके चले गए. उनको पता था कि अब एक शख्स मर गया है तो एलिफेंट्स आर गोइंग टू रिएक्ट. हाउसएवर उन्होंने क्या किया कि वो जो एक एलिफेंट थी, ठीक है, शी एलिफेंट, जिसका वो ओनर था, वो उसको लेके नहीं गए बल्कि कैंप से बाहर एक बड़ी सारी ओपनिंग थी, उस ओपनिंग में उसको अच्छी तरह से चेन से बांध दिया और उसके लिए ढेर सारा खाना रख दिया. बिकॉज वो बहुत वियर्ड एक्ट कर रही थी, वो अपने कान फ्लैप कर रही थी, अपनी ट्रंक ऊपर आसमान पे ले जाके टच कर रही थी, वो बहुत वियर्ड एक्ट कर रही थी. तो जो उसका अंकल था, जो बच्चा मर गया था, उसका जो अंकल था, उसने उसकी टेक केयर शुरू कर दी उस शी एलिफेंट की और उसको बाहर लॉक कर दिया. लेकिन क्या हुआ, आधी रात को somebody opened that elephant up. That is not mentioned in the paragraph. That is for you to think who that person might be. And the elephant ran towards the Takeen's office. Takeen's house. The house and the office were the same, right? तो वो उसकी तरफ रन की. अब जो अंकल था उस एलिफेंट के ओनर का, उसका जो रूम पार्टनर था, उसने ये कहा कि लेट्स रन अवे, बट द अंकल assured him to be comfortable to stay where he was. उस रात को बहुत ज़बरदस्त थंडरस्टॉर्म था, लाइटनिंग थी, बारिश थी. मिके ने गन निकाल के एलिफेंट के फोरहेड पे शॉट किया, बट बाय दैट टाइम द एलिफेंट हैज़ गेन्ड सो मच मोमेंटम, सो मच स्पीड कि वो सीधा जाके तो मिके के घर को टकराया. मिके का जो ये टाई था दैट गॉट ब्रोकन, इट फेल ऑफ, और एलिफेंट ने मेक श्योर किया कि जब वो गिर के मरने लगा है तो वो मिके के ऊपर इस तरह से गिरे कि मिके का कचूमर निकल जाए. ये उस एलिफेंट का बदला था अपने ओनर के लिए कि जिसको मिके ने बहुत ब्रूटली, क्रूली, विकेडली और जुल्म के साथ मारा था. This is what the story is all about. I hope you will read it. I hope you will find it quite interesting. So let's move on to the vocabulary exercises of this specific comprehension. Yes, my dear children, the first exercise 1 of vocabulary, is asking you to find the literal meanings of the given words and find the contextual meanings of the given words. All of these words are from paragraph 4. Paragraph 4 वो paragraph है जहाँ पर उस बच्चे का एलिफेंट के ओनर के अंकल ने उस एलिफेंट को अच्छी तरह से बांधा था ताकि वो लूज ना हो जाए, बिकॉज द एलिफेंट वाज शोइंग नर्वसनेस, एंजाइटी, टेंशन, रेस्टलेसनेस. ठीक है, तो उन्होंने उसको बांधा था और उसको बांधने के लिए बहुत सारे डिफरेंट वर्ड्स यूज हुए हैं. वो वर्ड्स उन्होंने आपको गिव किए हैं एंड दे हैव आस्क्ड यू टू राइट देयर लिटरल मीनिंग्स एंड कॉन्टेक्चुअल मीनिंग्स. आई हैव रिटन देम ऑन द बोर्ड. अलोंग विद दैट आई विल गिव यू द सेंटेंसेस एज वेल. सेंटेंस कंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. हर वर्ड की सेंटेंस कंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप सेंटेंस कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे आप कोई भी चीज इंग्लिश में बेहतर नहीं कर सकते. राइट. Tethered. Tie an animal with a rope or chain so as to restrict its movement. ये tethered की literal meaning है. Contextual meaning भी यही है. उसने क्या किया था? The old man tied the elephant, or the old man tethered the elephant with two immovable and immense trees so that the elephant could not get off by herself. ठीक है, immovable. अब देखो वो trees कितने strong होंगे जिसको कि उसने select किया था in order to tie that elephant,
Elephant is a very strong animal, right? The largest animal on the world. तो उसके लिए टाई करने के लिए जब 2 उन्होंने ट्री सेलेक्ट किए तो वो कितने स्ट्रांग होंगे. नेक्स्ट वर्ड इज keeping her bound, to keep her constrained, and in this specific comprehension it is used to say to not let her go all by herself. The old man tethered the elephant to 2 immense and immovable trees in order to make sure that he has kept her bound, in order to make sure that he is keeping her bound, because the elephant seemed to be filled with a emotion of revenge, seemed to be filled with an overwhelming emotion of revenge. Anything. काफी डिफरेंट तरीकों से सेंटेंस आपको बता दिया मैंने. नेक्स्ट इज फेटर्स. फेटर्स क्या होती हैं? फेटर्स वो चेन्स होती हैं जो प्रिजनर्स को लॉक करने के लिए यूज की जाती हैं, और यहाँ पर वो यूजुअली लाइट वेट चेन्स थी जिनसे रात को एलिफेंट्स को बांध दिया जाता था. एलिफेंट्स आर एन एनिमल ऑफ अ हैबिट. वो चेन्स बहुत लाइट वेट थी, वो आराम से उसको तोड़ सकते थे, लेकिन उनके दिमाग में ये बात थी कि सिंस हमें चेन कर दिया गया है तो वी कांट मूव एनीवेयर, राइट? दे आर एनिमल्स ऑफ कोर्स. ठीक है, तो the old man avoided using fetters to tie up the she elephant on that stormy night, because he knew that the elephant would break them easily ASAP it gets scared. Next is shackled. Shackled क्या होता है? Shackled होती है a pair of fetters used to bound hands and feet. They are chained together. आपने देखा होगा ना, ऐसे उनको बांध के रखते हैं मुजरिमों को. यहाँ पे चेन्स होती हैं जो जाके पाँव के साथ बंध जाती हैं, राइट? वो कहलाती हैं आपकी shackled. The serial killer was brought into the court tied with strong shackled, or the serial killer was brought into the court with shackled chains bound to all of his body, or we can improvise it. The serial killer was shackled when he was brought into the court. Towing chains. Towing chains कौन सी होती है? A rope or chain used for towing vehicles. आपकी गाड़ी कभी खराब हो जाती है, कभी आपकी नहीं भी खराब हुई हो तो आपने देखा होगा कि रास्ते में किसी की गाड़ी खराब होती है, वो चेन से लॉक हो जाती है, वो चेन से टो होके जाती है. तो टोइंग चेन्स are those chains, and over here they are used for harnessing logs. लॉग्स को बांध कर फिर वो टोइंग चेन्स के जरिए एलिफेंट्स से लेके जाते हैं. ठीक है, द एलिफेंट वाज नॉट ओनली bound with shackled but with towing chains to ensure that it does not escape, right? So this was matching vocabulary 1. Vocabulary 1 question which asked you to write the contextual and the literal meaning. Let's move on to the matching. जी बेटा, मैचिंग इज द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ द वोकैबुलरी. इसमें आपको वर्ड्स दिए हुए थे कॉलम 1 में और उसकी मीनिंग्स जम्बल्ड अप थी कॉलम 2 में. मैंने अरेंज करके आपको लिख दी हैं. I'll read them for you and then it is going to be easier for you to match it in your copy. So the first one was sparse, then was mount. Sparse means scant. Mount means riding elephant. Upheaval means commotion. Forage means search for food. Succulent means juicy. Locates means finds. Momentum means force. And horse means husky. So, let's construct sentences. Number 1 is sparse, which means scant. The prisoners were given sparse food to eat every night. Mount means riding elephant. The elephant rider mounted his elephant and rode towards the workstation. Upheaval, commotion. There was a lot of upheaval in the camp as soon as somebody shouted that there was a lion that had entered the camp. Forage, search for food. Nocturnal animals forage at night.
succulent, juicy. My pet dog likes succulent bones to chew on. Locates and finds. It was Vasco da Gama who had located the right position of or the continent of America on the map of the earth. Momentum or force. The car moved with such momentum that it broke the record of all the racing cars in the track. Horse and husky. After I had eaten an ice cream after a chilled can of Coke, my throat ached and I spoke with a husky sound. Right? Let's move on to exercise 3. Exercise 3 ने आपसे ये कहा था कि पैराग्राफ्स हैं, ठीक है, इन पैराग्राफ्स में से जो सेंटेंसेस हैं इसमें कौन सा वर्ड आ सकता है वो आपने लिखना है. पहली 2 में मैंने पैराग्राफिंग का नाम लिखा है, आगे मैंने नहीं लिखा 3 में, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये एक्सरसाइज है आपके पास ऑलरेडी मौजूद होगा, आपको सिर्फ मैंने उसका सोल्यूशन दे दिया है. As the news agent was the only one in the vicinity from paragraph 2, the shopkeeper made a good living. From the viewpoint far above the town, we could hear the pealing of the church bells. This is from paragraph 4. Pealing of the thunder वहाँ use हुआ है, ठीक है. The pealing of the church bells is appropriate for this specific fill in the blank. Let's move on to the next. Before the earthquake, people felt the dash and ran out in terror from their houses. Tremor. और ये पैराग्राफ 5 में यूज हुआ है जहां एलिफेंट की जो वॉक थी उसके ट्रेमर जो है वो पीपल इन द कैंप वर एक्चुअली फीलिंग. The demolition work started this week in the preparation for building the new road. Demolition. The elephant knew where exactly to hit the house in order to demolish it completely. The operation of the little girl was successful, but the doctor warned her parents that she would be vulnerable to infection for many months. Vulnerable means can be exposed to, can feel, right? Can get. We move on to the last exercise of vocabulary, which has asked you to find 5 idioms or phrases with the word bolt. उन्होंने आपको ये पहला दिया हुआ है bolt of lightning, जिसका मतलब होता है a discharge of lightning with thunder. It was complete darkness and I was encamped in the middle of the forest. With the bolt of lightning, I had suspected a very fierce elephant or a very fierce lion hiding in the bushes near my tent, right? उन्होंने बोल्ट ऑफ लाइटनिंग आपसे दी हुई है और आपको कहा हुआ है कि आपने इसके और idioms और phrases अपनी डिक्शनरी में से निकालने हैं. मैं आपके लिए 5 लेके आई हूँ. I'll give you the idiom and its meaning or a phrase and its meaning and I'll construct live sentences, right? A bolt from the blue, something unexpected or surprising. The arrival of my uncle was a bolt from the blue because he said that he would not have been visiting us for the upcoming decade. Okay? Bolt bucket, a vehicle old or bad shape. A vehicle that is in old or bad shape. I know you don't trust my car, but this old bucket can take you anywhere you want to. Bolt upright, suddenly sit or stand up from reclining position. Reclining position, laying position, right? Late away, okay? As soon as the bell rang at midnight, I bolt upright to check who was there. Lock the door after the horse had bolted. Take precautions after the incident had happened. Wiring your house with fixing the security cameras after the robbery is to lock the door after the horse had bolted. And the last one is bolt out, quickly leave out somewhere. I bolted out of my house as soon as I realized that I was getting late for the meeting. Right? So these were all the bold phrases and idioms and their sentences. Let's do the quick recapitulation of today's lesson. We did Unit 1, elephants in specific. And then from elephants, we did the first comprehension, that was revenge. We did
the difficult words and their meanings. Along with that, we did the vocabulary exercises, all 4 of them. I hope you have solved them in your copy. I hope you have understood the explanation of the comprehension that I have given, and in the second lecture of this series we will do the reading for understanding and comprehension question answers of this specific unit. By this time, construct sentences from all the vocabulary words. You can even copy down the ones that I have given, right? Once you will copy it down, you will get it remembered through and through in your life. आपके लिए अच्छा होगा. एक दफ़ा सुनोगे और लिखोगे तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा. तब तक के लिए अपनी इंग्लिश टीचर को इजाज़त दो, ठीक है? हम दोबारा मिलेंगे, दोबारा बात करेंगे और इंशाल्लाह इसके कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ठीक है? ख्याल रखो, हंसते खेलते रहो, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़.